जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम MGT 501 का 38th लेक्चर कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका फुल नेम बुक का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयज़ राइट्स एंड डिसिप्लिन, सॉरी। तो यहाँ पर है हमारे पास एम्प्लॉय राइट्स, डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉयज़। तो इसमें बेसिकली जो है डिसिप्लिन और एम्प्लॉयज़ जो राइट्स होते हैं उन सब का जो है ज़िक्र किया जाएगा। इन्हीं दो टॉपिक्स पे बात होगी इसमें। टोटल हमारा जो है ये लेक्चर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। Employee rights. Employees' rights allow them to engage in conduct protected by laws and social sections. तो यहाँ पर एम्प्लॉय के जो राइट्स हैं वो यहाँ पर हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, उसके बाद है ये अदर राइट्स, और यहाँ पर है वेज मैनेजर एंड सुपरवाइज़र कैन इन्फ्लुएंस देयर कंपनीज क्लाइमेट ऑफ fairness and behavior. Management right, employment at will, employee rights challenges, random drug testing, electronic। जी, तो एम्प्लॉय राइट्स चैलेंजेस हैं ये। इसमें जो इसके जो है ना ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं? रैंडम ड्रग टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग और विसल ब्लोइंग। तो यहाँ से हम दोबारा से आते हैं। स्टैट्यूटरी राइट्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, OSHA, ये हमारे पास एब्रीवेशन बन गई है, ठीक है। नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट, ये एक और हमारे पास बन गई है एब्रीवेशन, NLRA। Categories of employee rights, statutory rights, contractual rights, other rights, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है, इतना लॉन्ग टर्म जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से भी किया जा सकता है। प्रोटेक्शन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, सेफ वर्किंग कंडीशंस, राइट टू फॉर्म यूनियंस, employment contract, union contract, employed contract, और employment policies। अदर राइट्स क्या हैं? एथिकल ट्रीटमेंट, प्राइवेसी और लिमिटेड, फ्री स्पीच लिमिटेड। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स जो हैं उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। आपने यहाँ से कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये इसमें ये एब्रीवेशन बन रही थी, ये करनी है जस्ट, और इधर से ये कर लेने हैं। हर एक के जो हैं ये दिए हुए हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़। Employee discipline is a tool that managers use to communicate the need to change behavior. They include progressive and positive discipline, progressive discipline and positive discipline. The most commonly used form of discipline
Progressive discipline consists of a series of management inventory interventions that gives employees opportunities to correct their behavior before being discharged. Positive discipline encouraging employees to monitor their own behaviors and assume responsibility of their own actions is called positive discipline. Management still inventories intervenes, but they counseling sessions in as opposed to punishment. की टर्म्स हैं यहाँ पर एम्प्लॉय राइट्स allow them to engage to in conduct protected by laws and social sanctions. Whistleblowing, a situation in which an employee notifies authorities of wrongdoings in organization. Discipline procedure that corrects or punishes a subordinate because a rule of procedure has been violated. Progressive discipline and approach to disciplinary action designed to ensure that the minimum penalty appropriate to the offense imposed. नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव डिसिप्लिन इनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू मॉनिटर देयर ओन बिहेवियर्स एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर ओन एक्शंस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिसिप्लिन. तो मैंने पहले भी बताया था, अब फिर से बता रही हूँ कि जो इसमें हमारे पास ये हैं की टर्म्स हैं, इन्हें सबसे पहले आप कर लें. ठीक है, तो उसके बाद जो है आप बाकी का जो है बाकी पूरा जो चैप्टर है उसको कवर करें. ठीक है, क्योंकि इनमें जो है आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस और लार्ज क्वेश्चंस दोनों ही हो जाते हैं. उसके बाद जो है काफ़ी सारी जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो बाकी आपका जो लेक्चर है उसमें मैंने जो हाईलाइटेड किया हुआ है वो सब का सब जो है उसमें हो जाता है कवर. नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर 39 डिसिप्लिन कंटिन्यू है ये. ठीक है, पहले जो है उसी से आगे आ रहा है. एम्प्लॉयज सेपरेशंस. डिसिप्लिन एज ये डिसिप्लिन हमारे जो है ना यहाँ पर मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, हम कर चुके हैं. ठीक है, ये वाला तो उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम देख लेते हैं. जी, तो यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन एक्शंस हैं. ठीक है, तो ये देखते हैं कौन कौन से हैं. डिसिप्लिन सिस्टम रिकमेंडेड बाय लेबर डिपार्टमेंट, फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन डिसिप्लिनिंग. तो यहाँ और कौन सा है कोई, हाँ जी है डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस एंड यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शंस प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन. जी बस इतना ही है. ये हमारे पास हैं ये 4. ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है, इनको जस्ट इनके जो पॉइंट्स हैं इन्हें ही देखना है आपने. ठीक है,
और इनके जो इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स आते हैं उन्हें आपने देख लेना है। तो यहाँ पर है हमारे पास इसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाले करने हैं। स्टार्ट करते हैं। यूजिंग डिसिप्लिन इन लाइन विद द वे मैनेजमेंट यूजुअली रिस्पॉन्ड्स टू सिमिलर इंडिकेट्स। Warning the employees of the sequences of the alleged misconduct. Punishing for the violation of rules that are reasonably related to the efficient and safe operation of the work environment. Investigating adequately. Applying rules and implies past history. Factors to consider when disciplining: seriousness of the problem, duration of problem, frequency and nature of the problem, extenuating factors, degree of socialization. Violations of these rules then is the organization whose rules are informal or vague. मैनेजमेंट बैकिंग। तो इसके बाद जो है हमारे पास जॉब बिहेवियर्स हैं। अटेंडेंस लाइक वर्क परफॉर्मेंस, dishonesty and related problems like on the job behavior like। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। मेक डिसिप्लिनरी एक्शन corrective rather than punitive. Make disciplinary action progressive. Disciplinary actions progressive discipline as mentioned। अच्छा, तो यहाँ पर इसका क्या है? Written, verbal, writing, written warning, suspension and dismissal। Let's briefly। अच्छा, तो यहाँ पर इसके 4 स्टेप्स हैं। रिटन वर्बल वार्निंग, और उसके बाद रिटन वार्निंग, सस्पेंशन, डिसमिसल। ये हैं इसके पॉइंट्स। तो द मिल्डेस्ट फ्रॉम द डिसिप्लिन इज द रिटन वर्बल। नेक्स्ट है हमारे पास रिटन वार्निंग। तो रिटन वार्निंग क्या होती है एक्चुअली कि एक वर्कर जैसे कोई छुट्टियां बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसको रिटन वार्निंग दी जाती है, लेटर वगैरह उसको सेंड किया जाता है कि वो आ जाए वरना उससे जो है फायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सस्पेंशन। अच्छा, फायर का मतलब जो है ये होता है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पता होगा लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। तो फायर का मतलब होता है कि उसे निकाल देना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, ठीक है, तो फिर जो है उसे वो फायर कर देते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। A suspension or a layoff would be the next disciplinary step, usually taken on the previous steps have been implemented without the desired outcomes. नेक्स्ट है हमारे पास
डिसमिसल, तो ये क्या है हमारे पास, management's ultimate and disciplinary punishment is dismissing the problem employee separations. Employee separations and employee separations occurs when an employee ceases to be a number of an organizations, and the rate of employee separations in an organization. The turnover rate is a measure of the rate at which employees leave the firm. The cost of employee separations, तो यहाँ पर जो है ये इसके कुछ हैं वो पॉइंट्स। तो ये है हमारे पास रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सेपरेशन कॉस्ट, ये 4 हैं इसके पॉइंट्स। नेक्स्ट है द बेनिफिट्स of employee separations, reduced labor cost, replacement of poor performers, increased innovation, opportunity for greater diversity. Types of employee separations: voluntary separations, involuntary separations, ये दो हैं इसकी टाइप्स, ठीक है। उससे आगे उनके कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसको देख लेते हैं। वॉलंटरी separations requires retirements. Involuntary separations, discharges, layoff, downsizing and right sizing, and a reduction in the number of people employed by a firm, also known as recruiting and right sizing. Managing early retirement. The features of early retirement policies, avoiding problems and with early retirements. Early retirements policies consists of two features: package of functional incentives that make it attractive for senior employees to retire higher than they planned, and an open window that restricts eligibility to fairly short period after the windows is closed. Avoiding problem with early retirements, managing early retirements policies requires careful design, implementation and administration. Managing layoff. Generally, an organization will institute layoff when it not reduce its labor costs of by any other means. Managers should first try to reduce labor costs with layoff alternatives. तो यहाँ इसके अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टरनेटिव्स टू ले ऑफ
इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ले ऑफ, ये दो हैं इसमें, ठीक है। तो इसके जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़, चेंजेस इन जॉब डिज़ाइन, पे एंड बेनिफिट पॉलिटिक्स policies, training non-traditional alternatives to layoffs. Notifying employees, developing layoff criteria, communicating to laid off employees, coordinating media relations, maintaining security, reassuring survivors of the layoff. Outplacement is a human resource program created to help separated employees deal with the emotional stress of jobs loss, and to provide assistance in finding a new job. The goal of outplacement, reducing the moral problems of employees who will be laid off, so that they will remain productive, minimizing the amount of litigation initiated by separated employees, and assisting separated employees in quickly finding comparable jobs. आउट प्लेसमेंट सर्विसेज, इसके जो हैं कुछ दो गोल्स हैं इसके, कौन कौन से? इमोशनल सपोर्ट, जॉब सर्च असिस्टेंट। The role of HR department in employee separation and outplacement, cooperation and teamwork characterize the relationship between managers and HR staff in employee separation process. Key terms: employee separations. An employee separation occurs when an employee ceases to be a member of an organization. Downsizing, reduction in the number of people employed by a firm, also known as restructuring and right sizing. Out placement, company procedure that assists laid off employee in finding employment elsewhere. जी, तो हमारा 39th लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हम 40 ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।